आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीपीयूज़ की दुनिया में डिटेल में बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और इन तमाम स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर एक दिमाग होता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये दिमाग असल में काम कैसे करता है? और सबसे मज़े की बात, इसकी साख्त यानी इसका फॉर्म, इसके फंक्शन के हिसाब से आखिर कैसे बिल्कुल बदल जाता है? ये जानना वाकई बहुत फैसिनेटिंग है। आज के इस सफ़र में हम 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, एवरीडे कंप्यूटिंग, द हैवी लिफ्टर्स, हिडन और मोबाइल ऑपरेटर्स, द पायनियर्स ऑफ द फ्यूचर और आखिर में फाइनल टेकअवेज। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ हम इस कोर कंपोनेंट को ठीक से समझेंगे। हम जब सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं तो बेसिकली हम कंप्यूटर के दिमाग की बात कर रहे होते हैं। ये किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस का वो सेंट्रल कमांड सेंटर है ना, जो लगातार इंस्ट्रक्शंस रिसीव करता है, कैलकुलेशंस करता है, डेटा प्रोसेस करता है और फिर सिस्टम के बाकी तमाम हिस्सों को प्रॉपर्ली कंट्रोल करता है। सोचिए, अगर दिमाग ठीक से कमांड्स ही ना दे तो पूरा का पूरा सिस्टम बिल्कुल नकारा हो जाए, राइट? अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है, आखिर इन मुख्तलिफ सीपीयूज़ की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? मतलब हर मशीन के लिए एक ही यूनिवर्सल दिमाग काफ़ी क्यों नहीं है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हर डिवाइस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर एक आम पोर्टेबल डिवाइस की बुनियादी ज़रूरत उसकी बैटरी बचाना होती है, जिसके लिए एक इंतहाई एफिशिएंट डिज़ाइन चाहिए। लेकिन इसके बरक्स एक बड़े सर्वर को देखें तो उसे एक ही वक्त में लाखों यूजर्स का हैवी लोड उठाना होता है, वो भी बिना रुके। दोनों के मकसद टोटली अलग हैं। दूसरा हिस्सा है एवरीडे कंप्यूटिंग, जिसमें हम घर और दफ्तर के रोज़मर्रा कामों पर फोकस करेंगे। अब अगर हम डेस्कटॉप और लैपटॉप सीपीयूज़ को कंपेयर करें तो इनमें एक बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। डेस्कटॉप सीपीयूज़ में आपको स्पीड और पावर कंजम्पशन का एक बेहतरीन बैलेंस मिलता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इन्हें अपग्रेड करना आसान होता है और इनका कूलिंग सिस्टम बेहतर होता है, जो इन्हें डेली ऑफिस वर्क के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। दूसरी तरफ लैपटॉप्स को देखें, इनमें फिजिकल स्पेस बहुत लिमिटेड होती है और इन्हें बैटरी पावर पर चलना होता है। इसीलिए इनका डिज़ाइन जानबूझकर कॉम्पैक्ट रखा जाता है। सारी तवज्जो बैटरी बचाने और पावर एफिशिएंसी पर होती है। हालांकि इस कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से इन्हें बाद में अपग्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द हैवी लिफ्टर्स यानी सर्वर्स, गेमिंग और वर्कस्टेशंस। सर्वर सीपीयूज़ का मामला रोज़मर्रा के आम कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा मैसिव होता है। ये प्रोसेसर्स असल में एक्सट्रीम हैवी कंप्यूटेशनल लोड्स को संभालते हैं। जो बड़ी वेबसाइट्स हम इंटरनेट पर ब्राउज करते हैं या जो पेचीदा डेटाबेसेस दिन रात मैनेज हो रहे होते हैं, वो सब इन्हीं पर चलते हैं। इनमें मल्टीपल कोर्स होती हैं जो स्ट्रिक्टली पैरेलल टास्क्स परफॉर्म करने में मदद देती हैं। और इनकी सबसे स्टैंड आउट खुसूसियत इनकी एक्सट्रीम रिलायबिलिटी। ये प्रोसेसर्स बिना किसी खराबी के लगातार चलते रहते हैं और एक ही वक्त में हज़ारों लाखों यूजर्स को सीमलेसली हैंडल करते हैं। अब गेमिंग और वर्कस्टेशन सीपीयूज़ की बात करते हैं। गेमिंग सीपीयू स्पेशली हाई क्लॉक स्पीड्स और फास्ट रिस्पॉन्स टाइम्स को प्रायोरिटाइज करते हैं ताकि रियल टाइम में बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले मिल सके, फ्रेम रेट्स हाई रहें और लैग कम से कम हो। इनका पूरा फोकस फौरी रिएक्शन पर होता है। लेकिन वर्कस्टेशन सीपीयूज़ इससे थोड़े मुख्तलिफ हैं। ये शेयर स्पीड के बजाय मैसिव कोर काउंट्स पर रिलाई करते हैं। क्यों? ताकि 3D रेंडरिंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन और कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक सिमुलेशंस जैसे इंतहाई डिमांडिंग प्रोफेशनल टास्क्स को पैरेलल प्रोसेसिंग के जरिए 100% एक्यूरेसी के साथ अंजाम दिया जा सके। दोनों हैवी लिफ्टर्स हैं, पर अलग अलग फील्ड के। चौथा हिस्सा, हिडन और मोबाइल ऑपरेटर्स, जो खामोशी से हमारी पॉकेट्स और स्मार्ट अप्लायंसेस को पावर करते हैं। ये वो प्रोसेसर्स हैं जो बैकग्राउंड में बिल्कुल खामोशी से अपना काम करते हैं, जैसे हमारे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के मोबाइल सीपीयूज़। इनका मेन फोकस एक्सट्रीम एनर्जी एफिशिएंसी, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और लो हीट पर होता है, ताकि आपकी बैटरी लाइफ लंबा अरसा चले। लेकिन एम्बेडेड सीपीयूज़ वो बिल्कुल अलग ही दुनिया है। ये हमारी वॉशिंग मशीन्स, गाड़ियों और मेडिकल डिवाइसेस में प्रॉपर्ली बिल्ट इन होते हैं। ये इंतहाई लो पावर चिप्स हैं जो बस एक मखसूस और हाईली रिलायबल टास्क करती हैं। एक मज़ेदार फैक्ट सुनिए, अपोलो 11 जो इंसान को चांद पर ले गया था ना, उसके नेविगेशन कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा ताकतवर दिमाग आजकल आपकी एक आम सी वॉशिंग मशीन में मौजूद होता है। क्रेजी, राइट? पांचवा हिस्सा, द पायनियर्स ऑफ द फ्यूचर, एआई और क्वांटम प्रोसेसिंग की एडवांस दुनिया।
यहाँ आकर मौजूदा दौर और मुस्तकबिल का कनेक्शन बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। AI CPUs स्पेशली इस तरह ऑप्टिमाइज़ होते हैं कि वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, इमेज और वॉइस रिकग्निशन और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग जैसे इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स टास्क्स को इंतहाई तेज़ी से प्रोसेस कर सकें। दूसरी तरफ क्वांटम CPUs बिल्कुल अपनी एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च स्टेज में हैं। इनका अल्टीमेट मकसद ऐसी इंतहाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है जो आज के ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स के बस की बात लिटरली है ही नहीं। ये आने वाले कल की कंप्यूटिंग का बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। आखिर में छठा हिस्सा, फाइनल टेकअवेज, दिमाग को उसकी ज़रूरत के मुताबिक मैच करना। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? सही टेक्नोलॉजी चुनने का सीधा सा मतलब बस ये है कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से ठीक प्रोसेसर का इंतखाब किया जाए। अगर रिक्वायरमेंट डेली होम और ऑफिस वर्क की है तो डेस्कटॉप सीपीयू बेस्ट है। पोर्टेबल काम के लिए लैपटॉप और बड़ी वेबसाइट्स या हेवी डेटाबेसेस के लिए सर्वर सीपीयू ज़रूरी है। हाई स्पीड गेमिंग के लिए डेफिनेटली गेमिंग सीपीयू और फ़ोन्स के लिए मोबाइल सीपीयूज़। इसी तरह प्रोफेशनल और डिमांडिंग टास्क्स के लिए वर्कस्टेशन, रोज़मर्रा की स्मार्ट डिवाइसेस के लिए एम्बेडेड और एक्सट्रीम एडवांस्ड कंप्यूटिंग के लिए एआई या क्वांटम प्रोसेसर्स ठीक तरह मैच किए जाते हैं। हर एक काम के लिए एक परफेक्टली स्पेसिफिक टूल। इस मालूमाती सफ़र को ख़त्म करने से पहले इस दिलचस्प सवाल पर गौर ज़रूर कीजिए। AI और क्वांटम कंप्यूटिंग मुस्तकबिल में हमारी इन रोज़मर्रा की आम डिवाइसेस को आखिर किस तरह रीशेप करेंगे? क्या आने वाले वक्त में लिटरली हर छोटे आले में एक एडवांस्ड AI दिमाग मौजूद होगा? सोचने की बात है। अपने ख़यालात और अपने शहर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस एक्सप्लेनर से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये डीपली फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। If you walk into any electronics store, the marketing pitch is always the same: bigger numbers, faster speeds, and premium performance. But chasing raw speed without context is a trap. The central processing unit, or CPU, is the brain of your computer. It receives instructions, calculates data, and dictates what every other component does instantly. The physical shape of your device creates a strict thermal and power budget. CPU architects have to obey the limits of that specific chassis. This chart maps exactly how we evaluate those trade-offs. We look at portability and efficiency on one axis, and raw processing power and heat output on the other. Form dictates function. The physical shape of the hardware you choose is the ultimate limit on what you can actually compute. Let's look at the ultra-mobile tier. Devices like smartphones face the most extreme constraints possible. They have absolutely zero active cooling fans and a highly limited battery capacity. Embedded CPUs, the chips inside your smart washing machine, medical devices, or car, manage these limits by abandoning general computing entirely. They perform a single specific function with minimal power. Mobile CPUs land here in the bottom right corner of our chart. To save physical space and protect battery life, they even integrate graphics processing directly onto the primary chip. The engineering result is an architecture heavily focused on efficiency rather than raw clock speed. They are designed to sip power, not gulp it. Pushing a mobile processor past its limits with sustained workloads causes extreme heat buildup. When temperature hits a critical threshold, performance drops off a cliff. This is thermal throttling, the device intentionally slowing itself down to prevent melting. In the ultra-mobile tier, sustained performance is purposefully sacrificed to guarantee your device actually survives the day on a single charge. Moving up to the compromised tier, we find the hardware built for daily home and office workspaces. Here, the physical constraints are moderate. Laptop processors still have to manage battery life and fit into tight spaces, but they need an architecture capable of juggling complex, everyday computing tasks. Returning to our chart, laptop CPUs sit right in the center. Desktop CPUs sacrifice portability to move higher up the power axis because they plug directly into the wall and have room for large cooling fans. Because desktops can effectively blow hot air out of a spacious case, they can sustain moderate to high clock speeds for hours without breaking a sweat. A laptop physically lacks that airflow. If it tried to pull the same raw peak power as a desktop, it would overheat rapidly. The trade-off in this tier is straightforward. You are giving up upgradability and consistent cooling for the convenience of carrying your work in a backpack. Then we reach the unrestricted tier. These are systems where physical constraints are entirely removed, powered by uninterrupted electricity and massive complex cooling solutions.
Server CPUs live here. They use multiple cores to handle heavy, continuous data requests from thousands of users simultaneously, keeping websites and databases online. Workstation CPUs take a similar brute force approach. They are built for immense parallel processing, tearing through professional tasks like 3D rendering or complex scientific simulations. Gaming CPUs hit the extreme top left on our chart, focusing on pushing raw clock speeds to deliver smooth, high frame rate gameplay. None of these chips offer any portability. To function optimally, these unrestricted processors almost universally rely on dedicated graphics cards, making the physical system even bulkier. The downsides are steep. You are committing to exorbitant financial costs up front and massive electricity consumption over the lifespan of the machine. If your daily routine consists of writing documents, browsing the web, or attending online classes, buying one of these machines is like commuting to a desk job in a freight train. This tier is severe overkill for everyday tasks. Paying for cores you will never utilize is just an expensive pro tax. Looking ahead, the bleeding edge of processor design belongs to AI and quantum CPUs. These architectures abandon flexible, general computing completely to achieve absolute dominance in highly specialized experimental calculations. But for practical consumer decisions today, blindly paying for the highest-tier device often guarantees a frustrating, mismatched experience. This flowchart simplifies the decision. Before you even look at a single specification, you have to identify your absolute primary constraint. If you are a casual user or a traveler, follow the portability branch. You should prioritize mobile or laptop architectures, optimizing for battery efficiency over peak clock speeds. If you are a high-end gamer or professional creator who needs raw power, you have to accept the complete loss of portability. Invest in an unrestricted desktop or workstation where thermal throttling won't bottleneck your renders. You cannot cheat physics. Understanding the strict physical limits of a device is the only way to make an informed, cost-effective hardware choice. Hey everyone, and welcome! So glad you're here. We are jumping right into a really fascinating explainer today, exploring the incredible world of computing hardware. We're going to be breaking down a fantastic assessment originally created by Yashap Sarfraz, which basically maps out exactly how the devices all around us actually process information. It's an inside look at how the process works now, literally pulling back the curtain on the hardware that runs our modern lives. So let's just dive right in. Here's a quick roadmap for this explainer. We're going to cover 1. The computer's brain, 2. Everyday CPUs, 3. Heavy-duty performers, 4. Servers and networks, 5. Specialized in future tech, and finally, 6. We'll see where you stand with your score. All right, starting off with Section 1, the computer's brain. To really understand computing architecture, we've got to start at the absolute core. What actually runs a computer? Well, it all comes down to the CPU, which stands for Central Processing Unit. You can literally think of the CPU as the brain of the computer. You know how your actual brain dictates every single action, thought, and movement your body makes? The CPU does exactly that for your device. It's responsible for processing every single instruction. Honestly, without this central brain, all those other fancy, expensive hardware components, they're basically just high-tech paperweights. Moving on to Section 2, Everyday CPUs. Now that we know what the brain is, let's look at how this applies to the devices we use every single day. Different shapes and sizes mean totally different engineering challenges. Take a look here. Desktop CPUs plug straight into a wall and have plenty of physical room for big cooling fans. So they give you this really nice balanced mix of performance and power consumption. They easily handle your everyday browsing and documents. But then look at laptop CPUs. Laptops are super cramped for space, right? You can't fit massive cooling systems in there, so their main focus completely shifts. They have to be incredibly power efficient and highly compact to give you longer battery life while making sure the machine doesn't overheat. And if you take that concept of limited space and shrink it even more, we get to mobile CPUs. These are the tiny little powerhouses running our smartphones and tablets. I mean, if you think laptop space is tight, a smartphone is incredibly restrictive. Because of that, mobile CPUs heavily prioritize energy efficiency above everything else to give you better battery timing throughout the day. And to save that precious space and power, they usually utilize integrated graphics. Instead of having a separate bulky chip for visuals, the graphics processing is built right into the CPU itself to handle all your swiping, scrolling, and videos. All right, Section 3, heavy-duty performers.
So what happens when energy efficiency isn't the goal, and we just want raw, unadulterated power? For the gamers out there, you're definitely familiar with gaming CPUs. Unlike everyday processors, these chips are optimized heavily for smooth gameplay and high, sustained performance. But the CPU can't do it alone. To get those top-tier gaming results, these CPUs have to be paired with a dedicated graphics card. It's teamwork. The CPU handles the game logic and physics, while the dedicated graphics card paints those beautiful 3D worlds on your screen. Taking professional performance a step further, we have Workstation CPUs. Their secret weapon for achieving massive power is an exceptionally high core count. Because they have so many cores, they excel at something called parallel processing. That basically means they can do a bunch of different super complex calculations at the exact same time. This makes them the ultimate choice for incredibly heavy tasks. Think 3D rendering, professional video editing, or running complex scientific simulations. When professionals need to do fast, heavy-duty work, this is the brain they turn to. Next up, Section 4. Servers and networks. Let's transition away from personal devices for a minute and look at the invisible infrastructure running the internet. I want you to really think about this for a second. Every time you open an app, stream a video, or browse a web page, you are requesting data. But where exactly are those websites and massive databases actually hosted? Like physically, in the real world, where does that data live? The answer? Server CPUs. These guys are the unsung heroes of the modern digital age. Unlike a desktop CPU that's built to serve one person sitting right in front of it, server CPUs are uniquely designed to shoulder massive, heavy computational loads coming from many, many users all at the exact same time. If you want to know how the process works now to keep our global internet infrastructure from crashing, it really all comes down to these chips. This breaks down exactly why server CPUs are just so effective. By utilizing multiple cores, the architecture allows the server to efficiently juggle thousands of simultaneous tasks. Whether it's fetching a database query for an online store or hosting a huge website, these multiple cores let the processor seamlessly handle a massive influx of user requests. That's how we get our data delivered in milliseconds. Section 5. Specialized and Future Tech. We've covered a lot of ground, but let's look at the most specialized and advanced applications out there right now. First up, embedded CPUs. These are kind of fascinating because they're not general-purpose brains. Instead, they're highly specialized chips tailored strictly for a single, specific function. You'll find embedded CPUs quietly living inside smart washing machines, modern refrigerators, and heavy industrial factory equipment. They don't need to run a web browser or play a video game. They just need to do their one specific automated job perfectly, time and time again. Building on that, let's take a peek at the future. First, AI CPUs are completely reshaping our world. They are optimized strictly for machine learning, processing data in ways that actually mimic neural pathways. And then, sitting at the absolute bleeding edge of modern science, we have quantum CPUs. The goal of quantum CPUs is just staggering. They're built to solve incredibly difficult, highly complex calculations that are quite literally impossible for traditional computers to figure out. It's an absolute paradigm shift in how processing works. Finally, Section 6, your score. We've covered the full spectrum of the computer's brain today. Now, based on Yashab Sarfraz's original 20-question assessment, let's mentally grade your retention on the concepts we just went through. If you feel confident you could answer 16 or more correctly, excellent. You've definitely understood CPU types and their features. If you think you'd land in the 11 to 15 range, it might be worth a quick revise to compare the CPU types again. And hey, if you feel you'd score less than 10, don't worry about it at all. That just means you should watch this explainer again and maybe jot down some notes. Learning is a process, and repetition is absolutely key. To wrap things up today, I want to leave you with this final thought. Take a look at the screen you're watching me on right this second. Based on everything we just covered together, which specific type of CPU is powering the device you're using right now? Is it prioritizing battery life, raw power, or maybe just everyday browsing? It's pretty wild to think about the incredible, invisible architecture working tirelessly right in front of you. Thank you so much for joining me on this explainer today. Keep learning, keep questioning, and I will see you next time.